योगा प्रोफेशन किसी को अगर चूज़ करना है तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट उसको बहुत प्रैक्टिस करनी है खुद। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप किसी को टीचिंग कराने जा रहे हो योगा के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस बहुत थरो होनी चाहिए। योगा इंडस्ट्री राइट नाउ देयर इज़ नो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। इफ़ यू वांट टू टीच any individual, you can probably just practice it on your own, have no certification and become a wonderful teacher, or maybe become the best teacher. Even if you become a very junior teacher in any kind of a gym, you're paid easily by around 800 to 1000 rupees a day, which is coming out to somewhere in between 25 to 30,000 a month. That's like the most beginner salary I'm talking about, the most. Anything is beyond that only. Hi, I'm Akshat Chawla, a yoga teacher and founder of Karm Yoga and Kaushalya Yoga Foundation. And over the years, I've gone from creating lights to spreading light. This started back when I was 13 years old. I was introduced to one of the aspects of yoga, which is the meditation. Slowly and gradually, that was my introduction to the practice. After that, I did my BTech, completed my BTech in electrical and electronics. Post that, went and did a job into financial planning after my college. Left that, did my own startup for 5 years into lighting manufacturing. So we used to fabricate lamps, design lamps for restaurants, hotels, bars, everything. At some point when I was working in professional life, then I started burning out. And there were a lot of things in my body that I was not liking which were happening. My body was going too out of shape. I was anxious all the time due to work stress. 2019, I started working out, and one of the classes, there's the cult chain that you would have heard of. I just took one of their yoga sessions, and that's where I was completely surprised of how I felt after the session, because that was something else. I could never feel that when I was doing gymming or other forms of physical exercises. So that's when I thought that, okay, let me just try to get more into the practice. In January 2020, I remember, there's an opportunity that came in Soham Ayur Yoga Ashram. It's in Bangalore. There was a volunteering opportunity that was posted on Facebook. I contacted them. So February 25th, I went to the ashram, and March 26th or 27th was something when I was supposed to come back, but the lockdown happened inside the ashram. There were more than 40 students inside the ashram, and we all were locked inside the ashram for 4.5 months, I think, without choice. And I think that completely changed our lives. So my shift from my professional life to the yoga life happened in those 4 months in 2020. अभी हमने 2 ब्रांड्स फाउंड करे हैं. वन इज़ द कर्म योगा एंड सेकंड इज़ द कौशल्या योगा फाउंडेशन. जो कर्म योगा है वो बेसिकली हमारे मेजरली हम लोग प्रोडक्ट्स में ध्यान देते हैं, एंड उसके अंदर वी आर ऑल्सो डूइंग रिट्रीट्स. योगा रिट्रीट्स हम कर्म योगा के अंदर ही करते हैं, एंड उन रिट्रीट्स में वी ट्राई टू live the proper yogic life for 3 or 4 days of however long the retreat is. And then there is second vertical which we have just recently launched. It's called as Kaushalya Yoga Foundation. The idea to create this foundation is that in future, under this foundation, we'll do a lot of programs where yoga is not reaching right now towards the parts of India. योगा प्रोफेशन किसी को अगर चूज़ करना है, सबसे पहली चीज़ है आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस बहुत थरो होनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ स्टूडेंट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. अगर एक स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, उसको आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आसन उसको कैसे सिखाने हैं, प्राणायाम कैसे सिखाने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ योगा कैसे सिखाना है, वो एक कम्युनिकेशन करने का जो स्किल है वो होना बहुत ज़रूरी है. In yoga industry right now, there is no particular qualification. If you want to teach any individual, again, if you want jobs in the industry, then there are particular qualifications. For example, 200 hours TTCs चल रहे हैं आजकल, 300 hours, 500 hours. These are progression. Then there are some colleges which are doing masters in yoga.
bachelor's in yoga. Our Ayush ministry has taken out some levels of certifications, level 1, level 2, level 3, wherein you can become a qualified yoga teacher, but per se there is no qualification that is required for becoming a yoga teacher. You can probably just practice it on your own from any private teacher, have no certification and become a wonderful teacher, or maybe become the best teacher. It's not that आपको ज़रूरी है सर्टिफिकेशन लेना या कोर्स करना एक अच्छा योगा टीचर बनने के लिए. आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है. There is no lack of opportunity, there is no lack of money, there is no lack of income when you enter into this industry. Even if you become a very junior teacher in any kind of a gym or any kind of a like institute around, you're paid easily by around 800 to 1000 rupees a day, which is coming out to somewhere in between 25 to 30,000 a month. That's like the most beginner salary I'm talking about, the most. Anything is beyond that only. If one is looking to enter it, there might be sacrifices initially. Of course, that is with any kind of work that we look to do out of the corporate. Initial days, initial months are a bit sacrificed. We might have low incomes, but I think that perseverance will always help if you are very true to your work. डिजिटल मार्केटिंग इज़ ग्रेट, करनी चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर और टीचर होने में बहुत फ़र्क है. एक टीचर एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग और डिजिटल मार्केटिंग पे अगर हम कम ध्यान दें और इनिशियली अपनी टीचिंग और एक स्टूडेंट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आई थिंक एक वो बहुत बेटर अप्रोच है मेरे हिसाब से. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से नहीं मिलेंगे. ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है, एंड जितना आपको काम वर्ड ऑफ माउथ से मिलेगा उतना आपको डिजिटल मार्केटिंग से नहीं मिलेगा. To sum it up, becoming a yoga teacher will always start with your personal sadhana. आप अपनी प्रैक्टिस करिए, कोर्स ढूंढिए, नॉलेज गेन करिए, बिकॉज ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होएगी. ये तभी ख़त्म होएगी जब आप मोक्ष ले लेंगे. ये उसके पहले कभी ख़त्म नहीं होगी. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो एक नॉलेज बेस बनाइए अपना. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ़ यू वांट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल career, whatever you are doing right now, if you want to drift towards yoga teaching, slowly and gradually करिए. Don't take a sudden jump into this field, because this field also has its own challenges. आपको initially शायद स्टूडेंट मिलें, शायद ना मिलें, और अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करके देखिए थोड़ा टाइम. और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप please keep looking for it. Don't get disheartened, because at some point if your practice is true, students will come to you. That's how it works. अगर आप बिल्कुल अपना करियर शुरू कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस टू डू राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ आपके करियर एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं नहीं. ऑफकोर्स सम कुछ तो होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि मेरे को 2 लाख की सैलरी चाहिए या मेरे को 3 लाख की सैलरी चाहिए या 4 लाख की चाहिए. मे बी इफ़ यू हैव कम आउट फ्रॉम अ ग्रेट कॉलेज, you might deserve that kind of a salary also, but initially थोड़ा टाइम अगर आप कम सैलरी पे काम चला सकते हैं, जैसे हम सब ने करा है इनिशियली आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, तो आई थिंक इससे बड़ी तो फिर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं. अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आप योगा टीचिंग में एंटर करना चाह रहे हैं, आप टाइम दे सकते हैं प्रैक्टिस को और टीचिंग को और कम इनकम को, बिकॉज इनिशियली तो इनकम कम होएगी अगर that's your direct line of entering. Slowly and gradually if you can build upon it in a couple of years, when you turn 20, 21, आप देखेंगे कैसा आपका progress हो गया है. Maybe you're earning really well while staying in this business. Namaste, I am Akshit Chawla. Thank you for watching me today on India Times. And if you are wanting to see more such content, please subscribe to India Times.